I'll be your host moderating today's program. And, the way they say it, your host and dost. So your dost came across few lines uh, last evening, and I really wanted to share that with everybody. उम्र को अगर हराना है तो शौक जिंदा रखिए, घुटने चले या ना चले, मन उठता परिंदा रखिए. With this, I would like to emphasize that aging या उम्र बढ़ना कोई बुरी चीज नहीं है. It's just time and experiences, seasoning an individual. It's a part of our life cycle. But unfortunately, we see it in a way sometime that, with age, we are getting old or, we are unable to do things, but we forget what we have achieved during the whole lifespan has led us to where we are today. And today, Brainpreneurs is trying to appreciate the seasoned older adults via an effort to address issues that they might be feeling or experiencing, or sometimes are afraid that will be coming across their way. Before we begin, I would want to give you a little introduction about Brainpreneurs. So this is an organization who follow a vision to build a holistic approach which equips individuals with the right skills, understanding and awareness to achieve physical, mental, emotional and social well-being for a healthier life. So what is really good about Brainpreneurs is that कि हम किसी एक एज लिमिट के साथ कन्फाइन नहीं है, या हमारा वर्किंग ना ही सिर्फ बच्चों के लिए, बड़ों के लिए है, बट फॉर ऑल एज ग्रुप्स. बिकॉज हम जो चाहते हैं, फिजिकल, इमोशनल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, that can be achieved as a society only when all age groups relate to it. So I hope that our efforts via this webinar can be really grateful for us to understand. So we know this webinar is about caring for our older adults, but इस webinar के audiences सिर्फ older adults नहीं हैं, हम जैसे लोग भी हैं जिनके अपने घरों में कुछ older adults हैं, and we care for them and are a little bit, sometimes worried about something that is there happening, where our older adults are experiencing or such, which, we think that might be happening to them. So हमारा जो vision है, उसके लिए we have a very extensive team, a team full of doctors, psychologists, art trainers, personality development trainers, therapists who are trying to achieve this holistic growth for a society. So this webinar is our effort, and we hope that it comes to a very valid, substantial conclusion for today. I would now like to introduce Sunaina Tikku, CEO and founder of Brainpreneurs. She's also an NLI and ICF coach and the brain behind this effort for caring for our older adults. So Ms. Tikku, over to you. Thank you, Pallavi. I think you gave a wonderful introduction to the vision from where Brainpreneurs, had started its journey. Brainpreneurs has always been an organization who has cared for people. It's as simple as people, where we want to extend our services and our expertise to people across ages, across age groups. So during pandemic, we got to do a lot of work around, I like the term that you have given, older adults. And many of us and many of them were confined to our houses, and that's where our team stepped out, and the team went ahead and visited their homes, tried to do whatever could be done within the limits of care. So we have had introduced then Care on Wheels, and we are very happy to let and the audience around to know that we have experts with us who can guide us in a proactive journey to how we can take care of our older adults. So as you rightly said, ये webinar खाली older adults के लिए नहीं है, हम सब के लिए है. It's just a medium to say and tell the world how we can be more empathetic, how we can
care about our people more, and what can be those small, simple things that can be done to take care of older adults at our homes. So thanks. On that note, let's start the webinar and let's deep dive into what all can be done. Thank you so much. And with this, I would like to introduce Dr. Shweta Razdan. She's a breast surgeon and a PGD in elderly care. And her PGD is not only her qualification for elderly care, but her passion and enthusiasm for it vouches more than the education. So, she would throw some light on the kind of problems that one could be failing with certain aging issues. And this is because it's a vast topic. We would like to concentrate on one aspect for today, and we promise we'll be back, getting Dr. Shweta back for more. So for now, over to you, Dr. Shweta. Thank you, Pallavi. Good afternoon, everyone. Thank you for the introduction. So we have started this series of webinar on elderly care because every one of us have someone elderly at our homes, and we have to take care of them. And we just want to improve their quality of life. The main message of these webinars is how we should take care of our elderly at home and how to improve their lives. So today's topic is falls and fall prevention. Let me just share my screen. Are my slides visible? Yes, they are. Okay, so with aging, the most two important things we need to remember are health and money. अगर आप देख सकते हैं इस स्लाइड में with around 2050 जो elderly population है, जो aging population है, it will be around 2.1 billion, and by 2100 the aging population will be 3.1 billion. So most important question इधर आता है, aging population क्या होती है? Any person, male, female, above 65 years is called elderly population or aging population. कौन सी ऐसी तकलीफें हैं जो elderly above 65 years most common है? इसमें सबसे पहले नंबर पे blood pressure, high blood pressure which is called hypertension, high cholesterol, arthritis, जोड़ों का दर्द, इस्कीमिक हार्ट डिजीज जिसको हम मायोकार्डियल इंफार्क्शन या हार्ट अटैक कहते हैं, डायबिटीज, क्रॉनिक किडनी डिजीजेस, हार्ट फेलियर, डिप्रेशन, अल्जाइमर्स डिजीज या डिमेंशिया, एंड क्रॉनिक पल्मोनरी ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज. अबव 65 इयर्स 80% लोगों में इनमें से एक क्रॉनिक डिजीज हमेशा होएगी और 68% लोगों में इनमें से दो डिजीजेस होंगी ही होंगी. विद एज होता क्या है, हमारे शरीर पे क्या इफेक्ट्स होते हैं? जैसे कि हमारा हार्ट विद एज उसका पंपिंग एक्टिविटी कम हो जाता है, मसल मास कम हो जाता है, ब्रेन्स में जो सेल्स होती हैं वो सिकुड़ने लगती हैं, जो स्किन है वो ड्राई होने लगता है और जो उसकी हीलिंग है वो कमजोर होने लगती है, किडनीज कम काम करने लगती है, हमारा विजन आईसाइट कम हो जाती है, हियरिंग कम हो जाती है, बोन्स की डेंसिटी या बोन्स में मिनरल्स की जो क्वांटिटी होती है वो कम हो जाती है, एंड टेस्ट जो हमारे टेस्ट बड्स हैं वो कम होने लगते हैं.
अब फॉल्स, हाउ डू वी डिफाइन फॉल या गिरना, एक आम भाषा में गिरने को डिफाइन कैसे करते हैं? फॉल इज एन इवेंट व्हेन अ पर्सन कम्स टू रेस्ट टू ग्राउंड और अनदर लो लेवल with or without loss of consciousness or injury. अगर हम फॉल्स स्टैटिस्टिक्स की बात करें, फॉल्स is the most leading cause of injury deaths in persons above 65 years of age. जो 2/3 फॉल होते हैं किसी में, नेक्स्ट 6 मंथ्स में फिर से फॉल होने का रिस्क रहता है उनमें. 1/3 ऑफ फॉल्स, 1/3 हिस्सा फॉल्स हमारे घर के एनवायरनमेंट की वजह से होता है. जितने भी फॉल्स होते हैं, ओनली 5% लीड टू फ्रैक्चर एंड हॉस्पिटलाइजेशन, और उसमें से भी 40% जो पेशेंट्स होते हैं वो नॉर्मल इंडिपेंडेंट लिविंग नहीं कर पाते हैं. अबाउट 65 years of age, 20 to 40% adults में mobility abnormality होती है, and about 85 years of age 50% लोगों में mobility abnormality होती है. अगर आप इस स्लाइड पे गौर करें, above 65 years of age 1 out of 3 people will fall each year. When you go beyond 72 years, everyone will have a fall every 2 years, and above 80 years everyone will have a fall every year. What are the effects of fall? Fall से क्या होता है? There may be some physical effects like skin injury होना, internal bleeding होना, brain में clot बनना, fracture, especially hip fractures, immobility हो जाती है, and hospitalization. इसके अलावा भी there are some psychological effects which can affect the person after a fall. There may be fear of falling, वो डर लगा रहता है कि फिर से मैं गिर जाऊंगा. There may be increased dependency, depression, anxiety, loss of confidence, and social withdrawal. What are the main areas where falls occur? अगर आप इस पिक्चर पे देखें, जो 60% फॉल्स है वो आपके घर के एनवायरनमेंट में होते हैं, 30% फॉल्स आउटसाइड होम, एंड 10% फॉल्स हेल्थ केयर एनवायरनमेंट जैसे हॉस्पिटल या केयर होम. और अगर घर में देखें तो सबसे कॉमन एरिया जहां फॉल्स होते हैं आर द लिविंग रूम, बेडरूम, फॉलोड बाय किचन, bathrooms, and hallways. American Geriatric Society and British Geriatric Society, these are the societies which look after elderly patients. So geriatrics is another name, a medical term for elderly patients. So they recommend that all adults above 65 years should have a yearly screening for falls, जिसमें हमें हिस्ट्री में पूछना चाहिए पेशेंट से कि कोई पिछले 1 साल में उन्हें फॉल तो नहीं हुआ या चलने में कोई प्रॉब्लम, एंड रिलेटेड इश्यूज. व्हाट आर द कॉजेज ऑफ फॉल? फॉल सबसे इंपॉर्टेंट कॉज है घर का एनवायरनमेंट, जिसपे मैं आगे और बात करूंगी. Second most common cause of fall is osteoporosis. Osteoporosis is there is decrease in mineral density of your bones. Bones हमारी बहुत fragile हो जाती हैं with age, and they are prone to injury. Another cause for fall is lack of physical activity. जब आप exercise ना करें, एक जगह बैठे रहें, that increases your risk of fall. Impaired vision, जब आपको कम दिखाई देने लगे उससे भी आपको फॉल हो सकता है. एंड medication is a very important reason for falls, and if you take more than 4 medication at a time, that increases your risk of fall. I will go into all of these details later on. Again, these are the risk factors. fall के लिए क्या है, जैसे मैंने बताया osteoporosis, कोई भी बैलेंस, गेट और मोबिलिटी प्रॉब्लम्स, जैसे कोई पेशेंट को न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, स्ट्रोक हो गया, पार्किंसन डिजीज हो गई, दीज डिजीजेस कैन लीड टू इंक्रीज इन फॉल.
विजुअल इम्पेयरमेंट्स, अगर किसी की कॉग्निशन है या कोई डिप्रेशन या डिमेंशिया में है, दैट इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ फॉल्स. पोस्चरल हाइपोटेंशन, ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट करना और कम हो जाना, दैट इज एन इंपॉर्टेंट रीजन फॉर फॉल्स. अगेन आई हैव स्ट्रेस्ड टेकिंग 4 और मोर मेडिकेशन, स्पेशली जो आपको हल्की सी नींद दिलाए या आपका ब्लड प्रेशर लोअर करे, अगर ऐसी मेडिकेशंस आप ले रहे हो, दैट मे इंक्रीज द रिस्क ऑफ फॉल. How to prevent falls, that I will go in detail in my next presentation after a few minutes. Thank you. Back to Pallavi, please. Thank you so much, Dr. Shweta. And as Dr. Shweta said and elaborated, कि age के साथ साथ हमारी body में physically there are certain changes happening, which is very normal. We need to understand that जब हम बच्चों से, you know, the age where we transit from being kid to so now we have, hello, am I audible? Yeah. Yes, you are Yes. audible. Okay. So as I was saying that Dr. Shweta very well defined कि physically क्या changes होते हैं body में, which happens with every age transition, right from childhood to adolescence to teenager to adults to older adults, which is very normal, but we need to understand and accept it properly. So talking about changes, I would like to introduce our next speaker. We have another seasoned speaker, Dr. Sushil Razdan, a well-known neurologist. So thank you so much, Dr. Razdan, for joining in with us today. And as Dr. Shweta was explaining, कि organ-wise changes हो रहे हैं, जैसे heart pumping rate में कमी आती है. So this leads to certain changes. One is physically, the level of energy probably sometime, and also emotionally and mentally, because you know certain kind of work that we indulge into our into while we are adults, then comparatively when we indulge into work when we are older adults reduces sometimes. उन सब चीजों से कभी कभी there is a change in thought process. There might be sometimes because you are older, your family is probably either at work or you know they're outside Jammu or sorry outside the state or the city. So it can also lead to loneliness. Sometimes there are physical ailments. So at that point of time, at our ages, what do you think? How you know families can play a role? How medical and psychological facilities can play a role? Thank you, Pallavi. Thank you, everybody. It's a very important topic, care of elderly. As Dr. Shweta said, falls are one of the most common causes of morbidity and mortality in elderly group. One of the, I think, third or fourth reason of cause of mortality. Now, as you grow in age, changes happen, as was said before. The neuronal numbers go on decreasing. That's one. The interconnection between the neurons get, say, weaker. There are changes in neurotransmitters. The blood flow goes less, usually due to chronic atherosclerosis, changes in carotid arteries, changes in vertebral arteries, especially if you are hypertensive, diabetic, or a heart patient, or you are a smoker, or you have genetic reasons for it. Then a lot of diseases happen to brain in elderly, right from strokes to Parkinson's to Alzheimer's disease. So that the point is, you can be very healthy in old age, but the chances of getting unwell neurologically or psychologically are more. Therefore, you need a lot of support at that age, and the most important support is the family support.
What's happening currently because of the type of work or modernity, what we call today's age, people have to work at different places. The families have become nuclear. Elderly parents live alone. Many times the spouse, one of the spouses, is no more. Therefore, the problem of elderly care becomes very important for the person, for the family, for the social system, for the country itself. And as was told by Dr. Shweta, the number of elderly people increasing is huge, and you will have 2 billion in next decade or two. They need physical support, they need psychological support, they need care during illnesses. And I think this is the most important problem a society will face and is facing currently. We see it daily. We see it daily. The lot of models are being tried all over the world. Old age model, home for elderly care places, elderly care in their own homes, special apartments for elderly. I think it's a huge task, and the debate about what to do with what is the best model for elderly care will be all the time thought about and practiced in our times. I'll come back to you, Pallavi, with more questions from you later on. Thank you so much, sir. Um, and with this, because we were talking about certain neurological changes as well, sometimes, physical, neurological, psychological changes also happen. And to address this, we have another speaker with us, Mohammed Gulzar Ahmed. He's a clinical psychologist at Brainpreneurs, with a quite considerable experience. And we would really like we would really like Gulzar to throw some light on how psychological health can be benefited. It can really prove to be something very useful for older adults. Gulzar, over to you. Thank you, Pallavi ma'am. It is a nice topic, and it will prove beneficial for our viewers. जहाँ तक साइकोलॉजिकल या रोल ऑफ साइकोलॉजिस्ट की बात है, जेरियाट्रिक साइकोलॉजी एक ब्रांच ही है अलग से साइकोलॉजी में. So it is the branch of psychology that focus on the mental health and well-being of older adults. Okay, जो कि स्टडी करता है people with age 65 and over to reduce symptoms associated with depression, anxiety, memory loss, Alzheimer's disease, dementia and Parkinson's. ये इन सारी चीजों को स्टडी करता है. अगर हम बात करें ओल्डर एज केयर की, तो इसमें सिर्फ एक ही केयर की बात नहीं, दो तरह के केयर हो सकते हैं इसमें. एक तो है कि घर में हम किस तरह से केयर करें, और दूसरा है कि हम एक कम्युनिटी लेवल में या फिर इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच में, जैसे हम यहाँ हमारे सेंटर में डील करते हैं जैसे बच्चों के साथ, वी हैव अ टीम, तो सेम उसी तरह से कम्युनिटी लेवल में एक टीम हो सकता है. ठीक है. और अगर हम स्पेशल प्रॉब्लम्स की बात करें, तो ओल्डर पीपल में डिप्रेशन के सिम्टम्स है ना, डिप्रेशन में भी बहुत सारे सिम्टम्स हो सकते हैं, गुस्सा आना या फिर अल्जाइमर्स से रिलेटेड प्रॉब्लम. ठीक है, कंफ्यूजन, गुस्सा आना, चिड़चिड़ापन होना, एंजाइटी होना, नींद की कमी एंड सब्सटेंस अब्यूज समटाइम्स. ठीक है, तो इस तरह के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं. हम उससे डील करने के लिए जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो वर्क विद older patients to deal with the many life stressors. ठीक है, और उनके घर में ट्रेनिंग देना, उनके जो केयर गिवर्स हैं उनको ट्रेनिंग देना. ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोग कर सकते हैं. कई प्रॉब्लम्स हैं. डिमेंशिया में मेमोरी ट्रेनिंग हम कर सकते हैं एज अ साइकोलॉजिस्ट. डिप्रेशन में उनके लिए कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी वी कैन यूज. ठीक है,
ग्रीफ थेरेपी ये वेल नोन थेरेपी है जिसे हम यूज कर सकते हैं, ठीक है, आफ्टर द डेथ जो प्रॉब्लम होता है। पेन मैनेजमेंट, समटाइम्स पेन के बहुत सारे इश्यूज होते हैं ओल्डर पीपल में, तो पेन मैनेजमेंट एक अलग ही ये है, तो उसे हम विद द हेल्प ऑफ साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट हम उसे डील कर सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा सब्सटेंस अब्यूज के प्रॉब्लम भी हो सकते हैं, तो सब्सटेंस अब्यूज और कई बार सुसाइड्स के भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं ओल्डर एडल्ट्स में। लोनलीनेस की कंप्लेंट्स आए हैं मेरे पास, कई ओल्डर एडल्ट्स के कंप्लेंट्स आए हैं कि मुझे अकेलापन लगता है, ठीक है, सारे लोगों की शादी हो गई है, घर में कोई नहीं है, ओके, ठीक है। तो कई लोगों ने कंप्लेंट्स किया है कि मुझे बहुत अकेलापन लगता है। तो इस तरह के कॉमन जो प्रॉब्लम्स हैं जो मैंने फेस किए हैं या जो मैंने देखे हैं, तो हम साइकोलॉजिस्ट वहाँ पर हेल्प कर सकते हैं उनको, ठीक है। और कई जो टर्मिनल इलनेस है उनमें भी साइकोलॉजिस्ट की हेल्प की जरूरत होती है, जैसा कि डॉक्टर श्वेता मैम बता रही थी कि जैसे फॉल में जो फॉल प्रॉब्लम्स होते हैं ओल्डर एडल्ट्स में, उनमें भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होते हैं, तो हम भी वहां पर उनको हेल्प कर सकते हैं साइकोलॉजिकली। इसके साथ अगर हम कम्युनिटी की बात करें, कम्युनिटी लेवल में गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे प्रोग्राम से इनिशिएटिव लिए हैं, जैसे नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम है, ठीक है, कुछ एनजीओज हैं, तो ये सारे कम्युनिटी लेवल में हमारे यहाँ इंडिया में चलाए जाते हैं इस तरह के प्रोग्राम्स, जहाँ पर हम हेल्प करते हैं ओल्डर एडल्ट्स के। डिप्रेशन कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग होता है उसे समझने में, ओल्डर पीपल में डिप्रेशन के प्रॉब्लम्स होते हैं, ठीक है, लेकिन उसमें जो उसका जो प्रेजेंटेशन है वो एडल्ट से अलग हो सकता है, तो हमें उसे समझने की जरूरत है। साइकोलॉजिस्ट सिर्फ सिर्फ थेराप्यूटिक एक्टिविटीज नहीं करते, बल्कि उसमें असेसमेंट वगैरह भी कर सकते हैं और उसके लेवल वगैरह को समझ सकते हैं कि किस लेवल में है, ठीक है। तो असेसमेंट एक पार्ट हो सकता है, एज अ साइकोलॉजिस्ट हम लोग असेसमेंट करके और उसके बाद फिर उसका हम लोग ट्रीटमेंट प्लान करते हैं विद द हेल्प ऑफ फैमिली मेंबर और विद द हेल्प ऑफ अदर प्रोफेशनल, ठीक है। समटाइम्स हमें ऑक्यूपेशनल थेरेपी की जरूरत पड़ सकती है, जैसा कि आपने कहा फॉल में प्रॉब्लम हो सकता है, तो ऑक्यूपेशनल थेरेपी की रिक्वायरमेंट हो सकती है। रिसर्चेस की अगर मैं बात करूं, तो जो रिसर्चेस हुए हैं उसमें, और अगर स्पेशली मैं जम्मू की बात करूं, तो यहाँ पर उतने ओल्डर एडल्ट्स के प्रॉब्लम्स नहीं देखे गए हैं जो रिसर्चेस कहते हैं, लेकिन दूसरे स्टेट्स में ओल्डर पीपल्स में काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स देखे गए हैं। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स की मैं बात कर रहा हूँ, और खास करके सुसाइड के प्रॉब्लम्स तो दूसरे स्टेट्स में काफी ज्यादा देखे गए हैं। कई पॉलिसीज हैं, जैसा कि मैंने कहा, जैसे नेशनल पॉलिसी फॉर ओल्डर पर्सन्स, मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007, नेशनल प्रोग्राम फॉर द हेल्थ केयर ऑफ द एल्डरली, इसी तरह से और भी हैं, मेंटल हेल्थ एक्ट 2017। तो इन सारे एक्ट्स में बात की गई है हमें मेंटल हेल्थ के बारे में एल्डरली पीपल्स के। सो हम इस तरह से इसको देख सकते हैं, और हम जैसे कि मैंने कहा हम लोग सारे मिल के, जैसे इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच के साथ मिलकर हम लोग काम कर सकते हैं, ठीक है। हैप्पीनेस की ट्रेनिंग, जैसा कि पल्लवी मैम ने स्टार्टिंग में कहा था, ठीक है, जिंदा होने के लिए जिंदा दिली जरूरी है, तो हमें हैप्पीनेस की ट्रेनिंग एक कम्युनिटी लेवल में हमें प्रोवाइड अगर हम कर सकते हैं वैसा, तो हम
हमें उस तरह का करना चाहिए, या फिर अपने होम इन्वायरमेंट को इस तरह बनाना चाहिए जहाँ पे ओल्डर पीपल खुश रह सकें, जिसको कि हम हैप्पीनेस इंडेक्स बोलते हैं। ठीक है, जो इंसान खुश है तो उसे इमोशनल प्रॉब्लम्स कम हो सकते हैं, ये फील कम हो सकते हैं, हम ऐसे कह सकते हैं। तो ये कुछ मेरे सजेशंस थे जो कि ओल्डर पीपल्स के लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं। थैंक यू पल्लवी, एंड थैंक यू। थैंक यू सो मच गुलजार, दैट वाज रियली इंसाइटफुल। और गुलजार जी की बात एक मुझे जो बहुत अच्छी लगी वो ये थी कि उन्होंने दो एस्पेक्ट में इसे डिफाइन किया है। एक एज प्रोफेशनल, एज साइकोलॉजिकल लेवल वो कैसे हेल्प कर सकते हैं, और दूसरा कि कैसे हम लोग एज अ सोसाइटी एक होलिस्टिक अप्रोच में हेल्प कर सकते हैं। हम लोगों को एज प्रोफेशनल्स हेल्प करना है, एज ब्रदर सिस्टर, एज चिल्ड्रन और नेबर्स हेल्प करना है, बिकॉज when we are talking about a more happier and healthier society, it would be only and only achieved if we come together. That is how we can ensure that हमारे society में every aspect, every age group is healthier. With that, I know we have taken a lot of time, but Dr. Shweta had a very insightful information for us regarding falls, जहाँ पे उन्होंने falls के बारे में बात की थी। अब डॉक्टर श्वेता से I will request कि वो fall prevention के बारे में थोड़ा सा हमारी audiences को बताएं. So over to you, Dr. Shweta. Thank you, Pallavi. I will just share my slides again. Now, how to prevent falls. So, अभी मैं जैसे मैंने पहले slides में बोला, what are the causes of falls? So, osteoporosis is a very common cause for falls. इसमें क्या होता है, जो हमारी bones होती हैं वो fragile हो जाती हैं और more prone to breaks and they become, उनमें minerals कम हो जाते हैं. Normally bones में हमारा calcium, phosphorus type minerals होते हैं. With aging वो minerals कम हो जाते हैं. So how to prevent this osteoporosis? Most important thing is to eat and drink sufficient amount of calcium in diet. What are the diets which are rich in calcium? These include milk, yogurt, cheese, fish, shellfish, broccoli, soya beans, turnip green, tofu, almonds. And we should not smoke, and we should try to avoid alcohol. Another reason for falls is inactivity. जब हमारी exercise नहीं होती है with aging, हमारी muscle tone कम हो जाती है, muscles में strength कम हो जाती है, bone mass कम हो जाता है, and flexibility कम हो जाती है. इन सब reason से falls होने का risk बढ़ जाता है. And what to do to prevent this? आपको daily कुछ physical activity में पार्ट लेना चाहिए, जैसे वॉकिंग, स्विमिंग या कोई भी मसल और बोन स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करनी चाहिए. थर्ड इंपॉर्टेंट रीजन फॉर फॉल्स इज इम्पेयर्ड विजन. विद एजिंग हमें कम दिखाई देने पड़ता है. उसके क्या कारण हो सकते हैं, जैसे कैटरैक्ट हो गया, ग्लोकोमा. इन सब चीजों से हम जो विजन का, जो पर्सन की आईज हैं उनमें डेप्थ परसेप्शन में चेंजेस आ जाती हैं, विजुअल एक्टिविटी में चेंजेस आ जाती है, पेरिफेरल विजन में चेंजेस आ जाती हैं, एंड ग्लेयर, जो हमारी आंखें होती हैं उसमें ग्लेयर बहुत आ जाता है. और हाउ टू प्रिवेंट दिस प्रॉब्लम? वी शुड हैव रेगुलर आई चेकअप्स. साल में एक बारी अपना अबाउ 65 इयर्स अपना आई चेकअप कराना चाहिए. और घर में हमें
कलर एंड कंट्रास्ट का यूज करना चाहिए, जैसे डिफरेंट जैसे हैंड रेलिंग है या स्टेयर रेलिंग है, उसका कलर एक होना चाहिए जो हम इवन अगर डिक्रीज्ड विजन भी है वी कैन आइडेंटिफाई दैट कलर। एंड अपने अगर आप आई ग्लासेस यूज कर रहे हैं उसको बार बार क्लीन करना चाहिए सो दैट आपका विजन क्लियर रहे। Medication is a very important risk factor for fall. If you are taking 4 or more medication, that increases the risk of fall. क्योंकि जितनी ज्यादा मेडिकेशंस आप खाते हैं उनका साइड इफेक्ट ज्यादा होता है। मेडिकेशन आपस में इंटरेक्ट करती हैं बॉडी के अंदर, तो उसका इफेक्ट भी आ सकता है। एंड विद एजिंग आप की बॉडी पे मेडिसिन डिफरेंटली रिएक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपकी विद एजिंग फिजियोलॉजी चेंज हो जाती है, फार्माकोलॉजी चेंज हो जाती है, तो विद मेडिकेशन वो उस पे इफेक्ट आ सकता है। अब मेडिसिन कैसे फॉल्स करते हैं, जैसे कुछ मेडिकेशन है जो आपको सेडेट करते हैं, थोड़ी नींद लाते हैं। कुछ मेडिकेशन है स्पेशली ब्लड प्रेशर लोअरिंग एजेंट्स, वो आपका ब्लड प्रेशर कम करते हैं। कुछ ड्रग्स हैं जो पार्किंसन लाइक सिम्टम्स करते हैं, वो आपकी मोबिलिटी कम कर देते हैं। कुछ ड्रग्स आपका ड्राई आईज कर सकती हैं या ब्लड विजन कर सकते हैं। कुछ मेडिसिन आपका शुगर लेवल कम कर सकते हैं और आपको चक्कर आ सकता है। कुछ ड्रग्स आपके एयर मैकेनिज्म को इफेक्ट कर सकते हैं। कुछ ड्रग्स आपके बॉडी टेम्परेचर को कम कर सकते हैं। कुछ एंजाइटी या डिप्रेशन के ड्रग्स आप में कंफ्यूजन पैदा कर सकते हैं। कुछ ड्रग्स जैसे ब्लड प्रेशर लोअरिंग ड्रग्स हैं, वो आपको डिहाइड्रेशन कर सकते हैं और आपका ब्लड प्रेशर लोअर करके फॉल कर सकते हैं। मैं एक इस पे गौर आपका लाना चाहती हूँ। ओवर द काउंटर मेडिकेशन, जिन मेडिकेशंस के लिए प्रिस्क्रिप्शन नहीं चाहिए होता है, जो आप इजीली एक केमिस्ट से ले सकते हैं, उनमें भी बहुत सारी मेडिकेशंस है जो हम रूटीनली ले लेते हैं और जिनसे फॉल रिस्क बढ़ जाता है। जैसे कुछ पेन किलर्स है जैसे आइबुप्रोफिन, नेप्रोक्सिन, जो हम जुकाम खांसी के लिए कुछ दवाइयां लेते हैं। एलर्जी टेबलेट्स स्पेशली क्लोरफेरेनामीन, प्रोमेथाजीन, ये भी इन दवाइयों से थोड़ी नींद आती है और ये आपका फॉल रिस्क बढ़ा सकती हैं। कुछ दवाइयां जो एसिडिटी के लिए ली जाती है जैसे रेंटेडिन, सिमेंटेडिन, कुछ स्लीपिंग टैबलेट्स जो आपका फॉल रिस्क बढ़ा सकती हैं। हाउ टू प्रिवेंट फॉल्स व्हेन यू आर ऑन अ नंबर ऑफ ड्रग्स। सो जब भी आप बहुत सारे ड्रग्स पे हो, अपने डॉक्टर से एक मेडिकेशन रिव्यू कराइए और वही दवाइयां लीजिए जो इम्पोर्टेंट है। जब देखा गया है कि जो एल्डरली पेशेंट्स गिर जाते हैं और उनका एक मेडिकेशन रिव्यू किया जाता है, दैट हैज लेड टू डिक्रीज इन फर्दर फॉल्स। जो आप दवाई ले रहे हो पता लगा के रखिए कि इनके साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं। जो भी मेडिकेशन है उनका अगर वो आउट ऑफ डेट हो गया है, उनको रिमूव कर दीजिए अपनी लिस्ट से। और अल्कोहल यूज विद मेडिकेशन इंटरेक्शन कम करिए। कौन सी दवाइयां हैं जो आपका रिस्क को बढ़ा देती है। डायूरेटिक्स जो आप ब्लड प्रेशर लोअरिंग के लिए खाते हैं, सबसे मोस्ट कॉमन कॉज है फॉल्स के लिए। स्लीपिंग पिल्स जिसमें एंटी डिप्रेसेंट्स, एंटी एंजाइटी ड्रग्स, एंटी साइकोटिक ड्रग्स, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स, ओपियोइड पेन किलर्स और पॉलीफार्मेसी। अगेन मैंने जैसे मोर देन 4 मेडिकेशन अगर आप ले तो 75% रिस्क है फॉल होने का। अगेन जो भी आप दवाइयां खा रहे हैं उसकी एक लिस्ट बनाइए। इवन कोई विटामिन, हर्बल मेडिकेशन भी ले रहे हैं, वो भी उस लिस्ट में नाम रखिए। अपनी दवाइयां एक ही जगह पे रखिए। आप कोशिश करिए कि एक ही केमिस्ट से आप अपनी दवाइयां ले। अगर दवाई खाने के बाद कोई आप में चेंजेस आते हैं, अपने डॉक्टर को अर्जेंट बेसिस पे इंफॉर्म कर दीजिए। एंड अपने डॉक्टर को बताइए क्या दवाई खाने से आप बेटर फील कर रहे हैं या वर्स फील कर रहे हैं, और अपनी दवाइयां
आप अपनी फैमिली या फ्रेंड से कभी मत शेयर करिए, क्योंकि आपको पता नहीं है उन दवाइयों का इफेक्ट दूसरों पे क्या होगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट, एनवायरमेंटल हजार्ड्स। अगर आप इस पिक्चर में गौर कर सकते हैं, इस रूम में कितने सारी चीजें हैं जिससे फॉल हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप देख रहे हैं तारें बिछी हुई है जमीन पे, छोटे कारपेट्स जस्ट ऐसे ही लाई कर रहे हैं, टेबल पे, सराउंडिंग टेबल्स पे हैफेजर्डली चीजें पड़ी हुई है, एक केटल है जिसमें से स्टीम निकल रहा है, स्टेयर्स पे इतना सामान है कि चलने की जगह ही नहीं है। These are called environmental hazards. To reduce falls at home, we have to reduce these environmental hazards. इसमें हम सबसे पहले क्या कर सकते हैं, जब भी आप बैठी हुई पोजीशन या चलने के लिए तैयार हो, ऑलवेज प्लान योर मूवमेंट। जहां देखिए मैं कहाँ चलने की कोशिश कर रहा हूं। Always do one thing at a time, never do multitasking, that will reduce your risk of falls. जब आप चलें, slowly चलें, don't rush. जब आप कपड़े चेंज कर रहे हो, बैठ के कपड़े चेंज करिए। ज्यादा लो फर्नीचर पे अवॉइड करिए बैठना, क्योंकि उससे खड़े होने, जब आप अगर लो फर्नीचर से खड़े होंगे तो फॉल का रिस्क बढ़ जाएगा। ऐसी चेयर पे बैठे जिसके हैंडल्स हो, जिसको आप पकड़ के खड़ा हो सकते हैं। अगर आप चलते चलते आपको चक्कर सा आए या लगे कि मैं गिर रहा हूं या गिर रही हूं, प्लीज अपने एक केन हमेशा साथ रखिए। अगर जैसे किचन में या कहीं रूम में पानी गिरा है फर्श पे, उसको एज सून एज पॉसिबल क्लीन करिए, और फ्लोर वैक्स अवॉइड करिए अपने फ्लोरिंग में। ये स्लाइड अगर आप पहली पिक्चर देखें, इसमें नंबर 1 और नंबर 3 पे टेबल पे हैफेजर्डली चीजें रखी गई हैं। नंबर 2 शूज और डोरमैट बीच कमरे में है, और नंबर 4 चेयर भी हैफेजर्डली रूम के अंदर रखी गई है। ये सब रिस्क आपके फॉल्स को बढ़ा सकते हैं। अगर आप इसी स्लाइड में सेकंड पिक्चर पे जाएंगे, ट्राई टू रिमूव एनीथिंग इन द सेंटर ऑफ द रूम। कोई चेयर या कुछ है सेंटर, डोरमैट है, शूज है सेंटर ऑफ द रूम में, उसको हटा दीजिए। जो टेबल है, ऑलवेज कीप अ लाइट नियर यू, जो आप इजीली ऑन कर सकते हैं जब आपको खड़े होना है या चलना है। एंड ऑलवेज कीप अ फोन नियर बाय यू। अगर आप फॉल हो भी गया तो so that you can call your family or near ones immediately, so always keep a phone near your bed. अगेन कोई अगर आप वॉकिंग एड इस्तेमाल कर रहे हैं, वो हमेशा आपके बेड के या चेयर के पास होना चाहिए, ना कि दूर, बेड से दूर। अपनी बेडिंग आप ध्यान से फोल्ड करके रखिए, बिकॉज अगर बेडिंग फर्श पे हो तो स्लिप होने का रिस्क बढ़ जाएगा। एक मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक शूज एंड फीट डिस्कस करना चाहती हूँ, बिकॉज अगर आपके शूज प्रॉपरली नहीं होंगे तो आपका फॉल रिस्क बढ़ जाएगा। प्रॉपर शूज अगर हो तो आप पेन फ्री रहेंगे और स्लिप होने से अवॉइड हो सकता है। अवॉइड करिए हाई हील्ड शूज और स्लीपर्स पहनना, और अवॉइड करिए जो आप टाइट शूज पहनना। सो ऑलवेज वेयर अ कंफर्टेबल शूज। जैसा अगर आप इस स्लाइड में फर्स्ट पिक्चर में देख सकते हैं, स्टेयर्स पे कितना सामान रखा गया है, कारपेट है, शूज हैफेजर्डली रखे गए हैं। टू प्रिवेंट फॉल ऑन स्टेयर्स, हमेशा एक हैंड बार या हैंड रेलिंग होना चाहिए जिसको पकड़ के आप नीचे उतर सकते हैं। कोई भी चीज, कारपेट, शूज या और कोई भी चीज आपको स्टेयर्स पे नहीं रखनी है। इस स्लाइड में अगर आप लिविंग रूम में देखें तो हैफेजर्डली वायर्स हैं, डोरमैट्स हैं, कुछ वूलन मटेरियल पड़ा हुआ है। वायर्स ओपनली रूम में नहीं रखनी है। कोई भी रैग या कारपेट्स
रूम के सेंटर में नहीं होना चाहिए और कोई भी चीज फ्लोर पे नहीं होनी चाहिए. सो फ्लोर शुड बी एम्प्टी ऑलवेज. बाथरूम टिप्स. बाथरूम में अगर फ्लश पे सिर्फ खड़े होने के लिए हैंड रेलिंग, अगर आप फर्स्ट पिक्चर में देखें, नहीं है. नहाने के लिए भी कोई हैंड रेलिंग या चेयर नहीं है. एक डोरमेट है जिससे आपका स्लिप रिस्क बढ़ जाएगा. सो ऑलवेज इन अ बाथरूम around the flush there should be a handrail. If you are taking a shower in a tub, always sit on a chair and take a shower, and there should be a hand railing there also inside the tub. If you can appreciate this picture, hand railing first picture में दोनों side पे है और second picture में भी जहां आप नहा रहे हैं वहां एक chair है और side में hand railing है. Last but not least, love and respect your old age because you are also going to age. Thank you, Pallavi. I will stop sharing my slides. Thank you so much, Dr. Shweta. It was really, really very insightful. जो Dr. Shweta ने बताया, and specifically what Dr. Shweta did was the illustration that she had shown us. It really made us understand how we can at least reduce hazards at home. घर पे हम लोग कैसे ध्यान रख सकते हैं. And as Mr. Zahir had just messaged us, it's very insightful as well that an occupational therapist can also play a great role. ये उन्हीं lines पे है जो गुलजार जी ने बोला था कि we have to have an holistic approach. So when we talk about caring about our older adults, it has to be from one, family, second, medical facility, third, psychological, fourth, if there's a requirement, an OT and a PT. So this is what an holistic approach will be, that whatever expert we think is needed should come together, and should the older adults have to be taken care of really properly. As Dr. Shweta just said, it's not only them, everybody of us will age, and it's not only about doing it for them, but doing it for our own selves also, so that we understand how things have to be done in a proper way. Thank you, Mr. Zahi, for your insightful message. And thank you so much, Dr. Shweta. Also, I would like to add in here that what we are delivering here is a general information which people should know. Say for example, there are certain things which are very individualistic. तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि your medicines can be a source which are proving to hold you back, please go to your respective doctors, because they are the people who can tell you what is right and wrong for you. Also with this, I would again want to go back to Dr. Razdan, and जो Dr. Razdan और गुलजार जी ने बोला कि systems have changed, at least in our country. So from joint families, we have moved to nuclear families. From everybody staying together, we have moved जहाँ पे बच्चे बाहर जा रहे हैं. Somebody is out because of education. Somebody is out probably because kind of searching for a better job. जैसे डॉक्टर राजदान ने बोला कि कभी कभी हस्बैंड वाइफ भी अलग अलग रह रहे हैं. So the number of people staying together have reduced. There is a big change in our social system. How, Dr. Razdan, do you think that this is also affecting our older adults? And also there is a new concept. I say new because for India it was a foreign concept for a very long time, which is old age homes. And then there are in certain cities of India there are specific societies for older adults. So what are your views and how this can be
beneficial or not beneficial? If you could give us some more insights on that, Dr. Razdan. This is the most difficult part. See, there's no final word on it. Every society, every country is, and everybody is dealing it in his own or different way. Look, as you rightly said, many elderly people are alone, or just a couple is staying, and their age is in late 70s, 80s, and they are, even if they are healthy, they have a lot of issues. If they are unwell, then the issues become huge. Usually, majority of their children, relations are away, geographically away. They may not be digitally away. How to get about them? See, my personal view is different from what is practiced. A lot of old age homes are coming in every metropolitan cities, as if it is a panacea for elderly care. They do flourish. The old age homes are flourishing in metropolitan cities, but the care there may be also quite good. I don't deny that, but the love, the affection, seeing your near and dear ones is quite missing there. And you see, the way your own people will take care of you will not be taken care at old age homes, where there are nurses, there are caregivers, there are aides, there are so many things. They try their best, but the difference will be very visible. And when you move your elderly people to old age home, they already have memory disturbances. It's very difficult for them to relate to a new place. They are even alien in their own homes. And now when you move them to a different physical place, the deterioration is rapid. The psychological trauma is huge, and you know what happens later on. I think it's a very difficult thing how to go. My personal view is that elderly people should be kept at their own place, own home, where they have been living all their life. At least they know the place well. And as Dr. Shiveta said, proper environment has to be created there too, and there should be caregivers. It could be their own family members, own children, own grandchildren. It could be professional caregivers. It could be occupational therapists, physiotherapists, nurses, etc., which could take care of them at that place. And a system could be created where they would be regularly visited by people. It's very odd that all elderly people should live separately. Why can't they live with their younger ones? I have never understood that old age apartments. There have to be apartments for everybody. The elderly people would love to be with their younger ones. उनका तो they yearn to see their youngsters. How can they, that all elderly people should live in separate localities, separate societies? I have never understood this concept all over the world. This happens in Canada, this happens and then you see when they are in these homes, etc. During COVID, havoc was caused to these homes. Most of the people in these elderly homes died. In Canada, you have beautiful books. They have never been read in India. They were never shown visually in India. There was havoc in Italy, Europe, America. Most of the deaths happened in old age homes. Most of them, they were not taken care of. They were messy with stools, with urine, with bed sores, with COVID, with pneumonias. And the sights have been frightful and terrible. I think our elderly people should be cared in their homes by their loved ones with the help of professionals who could do it professionally by rotation, by daily going there or once, twice a week, with doctors, with nurses, with physiotherapists, with occupational therapists, with clinical psychologists, with family practitioners, with social society members, with people who love elderly people. And that would be the best system in any other part of the world. Thank you. I could answer more questions if you have later. Thank you so much, Dr. Razdan. And what Dr. Razdan said
kind of in my mind led to one of the term that we very frequently use in brainpreneurs, and that is inclusion. That everybody in the society has to be included at one platform. Let's not kind of, exclude them. And obviously, everybody has their own issues or probably duties or responsibilities to be catered on. But as Dr. Razdan said, that they can be at their home with proper medical help, with probably proper psychological help, and we as a country have developed ourselves medically quite better now, psychologically quite better now. As Gulzar said, there were certain acts, but what we need to do is execute them well, because the government, the authorities, a single section of society, say for example a medical society, can just they can make programs, they can try to execute them, but then we as people have to understand how to take benefit of it, because if you're not taking benefit of it, all these things on papers or would not make any difference. Thank you so much, Dr. Razdan. Thank you so much, Dr. Shweta, and thank you so much, Gulzar. This session was really insightful, and I don't know why, but just some lines that came in my mind while listening to the last section that Dr. Razdan had was that जिंदगी की जद्दोजहद में प्लीज इतना एक दूसरे को मत भूल जाइए कि बाद में जिंदगी पछतावे में बीत जाए. Let's physically being there is not important. You can pay a visit, but let's understand what are the requirements of the older adults of our society, of our families. And thank you so much, everybody, all the speakers, all the audiences that have joined. Thank you, Ms. Nanda, for these sweet words. And yeah, what we could do is efforts from our own side. And we hope that more people join in with us. We are trying, and as Dr. Razdan just said, we as an organization, Brainpreneurs, would try to extend our services not only at our respective centers, but we'll try to get into people's home. We'll try to facilitate and make things easier for them. And also, as we said, it's a program that we have indulged into, caring for older adults. It's not just one webinar. We will have more webinars. We will have more programs where we would request Dr. Shweta to please elaborate more on other aspects like dementia and other things that might be a common area of concern for older adults. We will request Dr. Razdan to, kind of bless us with experiences that he has and give us more inputs about all these things with, a strong medical background and a great experience bank. He could help us a lot. Gulzar with his huge psychological experience, and we'll be adding more people to it. We'll be adding more speakers to the program. Also, another effort that we are putting in is that next Sunday we will have an OPD for older adults at Brainpreneurs Jammu Center, which is in Shastri Nagar. That's 5th of March. We'll be adding on more details on our Facebook page. So please do let us know if there are any issues or anything that more you want to know. Thank you so much, everybody. Thank you for being a part of it. It was really helpful, and it was worth getting our Sundays in here. Thank you. Thank you.